watching a new emerging kind of activity. You know, Vikings would always invade with the women as well. Okay, all right. We need to be Vikings now. You notice I'm not disputing it. So, why are you doing this podcast? I'm doing this podcast, one, because I like you. Huh? That's right, ladies and gentlemen. This is Dr. Jaishankar, the Minister of External Affairs on TRS. Possibly the most requested episode we've had in the longest time because we've done so much geopolitical content and this legend has come up so much on the show that we just had to bring him on TRS. Keep in mind, this is a very short episode. There was a time constraint because of schedules on that particular day. So I couldn't podcast exactly the way I wanted to with Dr. Jaishankar, but it's a beginning. You're going to see an incredible episode of TRS up ahead. Special thanks to MyGov India for making this happen. This is my mid-20s dream to talk to this man, considering how much he's done for the country, considering how he's rewritten the country's branding on a global stage. This was a great icebreaker with the legend. As I said earlier, I was a little nervous to speak to the cabinet ministers, but Dr. Jaishankar made me feel extremely comfortable. That's his actual real life vibe if you're a young, motivated Indian. And that's what this particular episode 1 with Dr. Jaishankar was about. It was about the young, the new, and the motivated India. I hope you enjoy this particular episode. I hope every single young Indian watches this episode because, to be honest, jokes apart, we're living through some intense times and we need to turn to people like Dr. Jaishankar for guidance about the future. So, I'm going to let you slip into the episode. It is a slightly shorter episode. We will come back with a much longer one with Dr. Jaishankar. But for now, enjoy this legendary piece of TRS. Dr. Jaishankar, the most requested podcast possibly that we ever had. How are you and why do you think that is? Oh, I'm good. Been a busy few weeks. But I would say probably people are more interested in foreign policy. Nowadays. And maybe they'll come to watch you. So... I mean, geopolitics is one of those subjects that people have been lapping up only recently, but lapping it up heavily. And you're the poster boy for everything that's happening correct geopolitically for India. Okay, that's good to know. But in a way, it's natural. Look, what do we do most of the time? You get up in the morning, first thing you do is reach out for your phone, right? And see what is it you missed when you're sleeping. Now, what it's done is it has connected us completely to the world. Yeah. And because of the phone, and then you build everything around it, once you start getting used to global content and global comparisons, then, what you eat, what you read, what you think, everything becomes global. Yeah. So that's why they call it globalization. Okay. Simple question for you. Who is Dr. S. Jaishankar, the man? Like that people don't know. I'll tell you why. Right now, you're very popular on shorts and reels for your very aggressive comebacks and your very aggressive responses. And in many ways, I feel like Virat Kohli and yourself are the faces of young India in some ways. This is how young India There's a slight age difference between us. No, but you're still the guy young India is like cheering for. When we see you up there talking to all these people from other countries, we're like, yep. That's the response that they should get. Look, I'm a trained diplomat whose general SOP is, play it cool, sort of don't make too many waves, etc. Now, partly I've transitioned into being a political face, okay? But even I would say the diplomatic side of me, which is still very deep, after all, I've done it for 45 years, maybe more now. It's like this, I'm very
nice to people who are nice to me. When I get pushed, I think it's natural to push back. And one of the things that has been happening to a bit is in the last year and a half, people have been pushing us a bit, you know. So I feel, I mean, it's you brought up Virat Kohli cricket analogy, you know. If you get a few bouncers, you want to do something with it, no? Hit that pull shot. Yeah. Okay. You know, when you say the sentence, when I get pushed, in many ways, your I get pushed is actually when India gets pushed. Absolutely. And you are the personification of India on a global scale. Keeping that in mind, I want to ask you why PM Modi said that you have adbhut thoughts. No, he didn't exactly say adbhut. I think he said वो अंदरूनी हाँ कि उनको बहुत अनुभव है. Look, to be very frank, we had got off a plane. I was myself a little bit zonked getting off the plane. And he was talking about just outside to a group of supporters. And I guess, I didn't ask him after that, okay? I guess what he was really saying is, look, this guy has watched a lot of people come and go. So he's seen a lot. So maybe you should talk to him and ask him what's different. What's your gauge? Or what's different? Yeah, about you? No, I don't think it was so much what he was talking about me. He was actually saying that, look, guys, talk to him because he will tell you how much, the prime minister's visits have changed, how much foreign policy has changed, how much the country has changed. So it was more my thoughts rather than me as a subject that he was talking about. That's my take of it. I think it's one and the same thing. Whatever. Okay. I had Ishant Sharma on the show yesterday. Oh, he's a really? cricketer. Okay. And he spoke about how after a certain point, because you've played so much cricket and you have so many experiences that you've had, your pattern recognition improves. Some people would call pattern recognition intuition or the sixth sense. Mm-hmm. I am 100% sure that even on a geopolitical scale, there is a role of your sixth sense. Absolutely. I agree with you. Can you talk a little bit about this? Like a slightly higher level of pattern recognition, or even go one level higher than that? Is there like a spiritual aspect? I mean, I use that word cautiously. No, look, what happens is this is partly experience, but it's partly also hard work. Any business, we are using a sports, but I would use it in my own line of work. You spend a lot of time reading other players, understanding their game, their play, how does it work, their mind games which they try on you. So you try to see patterns in other people, in other countries, in other other foreign ministries, etc. Just like you do in sports. So in that sense, there's something it's a competitive activity. So if you're going up against a competitor, and I am a very competitive person, okay? I mean, when you ask me that bit, I absolutely let you know. I mean, I try to work out as much of it in sports, but I still have a lot left over for my real business. So if you are a competitive person, all the time your sixth sense, as you call it, is working on your, one part I'm listening to you, but if I've seen you do this before, we've talked before, I've prepared by watching you or studying you before, the sixth sense takes over. So sometimes, when you are in a situation, people sometimes ask you saying, oh, did you think about that line before? I didn't. I mean, that sixth sense takes over at that time because you already kind of, it's moving faster than your mind. And it's actually telling you, okay, they're going to hit you with this. So you're already processing it. So you see that coming at you before it actually comes at you. So that I would say it's more like a instinct. You call it spirituality. I wouldn't go that far, but Sure. there you have. But I just want to round off the earlier point. You asked me what did PM mean by that? What has changed? I think one part is we're really living under Prime Minister Modi in a different era. I mean, he has been in many ways personally transformational. He's churned the system in a very, very radical way.
I mean, I joined the government when another Gujarati was a prime minister, Morarji Desai. Okay, so that's how far back I go. Huh? A lot of people, your listeners would be wondering, okay, what the hell is he even talking about? No. Huh? You're still the poster boy of young India. But look, it's not often you get people in any line of business, leave alone in something like running a nation. You can have the big thoughts, the strategic ideas, the grand vision. Huh? Very seriously, you have the revolutionary concepts that you chart out. Okay, there's a different way of looking at a problem. That's one skill. And then you have going down to the details, saying, okay, this needs to be tweaked, that detail needs to be looked at, this problem needs to be fixed. Guys, you haven't done the backup on this. Usually, there are talented people, inspired people who get the big picture. There are people who are very grounded, who kind of go down, drill down. It's very rare to find it in one person. And that, I would say, to me, is a very singular quality of Prime Minister Modi. Yeah. And that makes it very, in a way, very interesting to work with him, but it makes it very challenging because he can challenge you right up there. He can challenge you right down there, What's your current challenge? Look, the world's a tough place right now. We barely come out of this COVID thing. You had this Ukraine conflict. And all the consequences which came out of it, energy, food, inflation, fertilizer. If we had not handled it well, we actually, the Indian consumer today, the average person, you and me, it would have actually hit us in our pockets. We would have seen much higher inflation. We'd be paying much more for our oil than we are. So I'm actually looking at the world where everything is coming at me at the same time. There's a health issue coming at me. There's an energy issue coming at me. I have a set of border problems on the border areas with the Chinese. I have the pending, the old problem with the Pakistanis who, have been doing terrorism for so long. And at the same time, I'm growing. My people are traveling abroad. And for me, one big part is how, foreign policy is not a kind of a board game or an academic exercise. It actually affects every person. So in my own mind, it's like, how do I get this foreign policy for you personally, right? How do I secure you when you travel? How do I look after you when you get into problems? How do I make sure, if you're a student, that you can work on the side and support yourself? Or that, you don't have to wait for 2.5 years for a visa by a foreign embassy. So it's, as I said, I've also learned, it's the small things, it's the big things. You got to get them both right. The one truth I've learned about geopolitics is that it's money oriented. If you have the money, it helps you geopolitically. The second truth I've learned is that, and this I've learned in the last 3 days speaking to the cabinet ministers, all right, is that the role of entrepreneurs is just do your own thing, create employment, increase the exports of the country, help the country become richer. Would you like to give the youth and especially entrepreneurs any other geopolitical advice when it comes to this? I don't want to use the phrase India versus China, but this whole scenario. How can we help? No, I think you're smart not using that phrase India versus China for this reason. Yes, we have issues with China, but that's not the only issue. I mean, we have to be fundamentally competitive. If I do not have the factories, if I do not have the as you say, the entrepreneurship, the businesses, the startup, the agriculture, the infrastructure, it's not just the Chinese. The rest of the world will also run over me. So, it is, at the end of the day, there are roughly 200 nations in the world. Okay, maybe about 125, maybe much smaller. Okay, after that, once you start grading them, there will be a zone. Okay, there'll be a zone of countries who constantly compete with each other. They could even be friends.
The US and Europe are friends. They compete like hell. Okay. So you'd have a Europe, you'd have an America, Russia, China. Then you add, maybe countries who are economically smaller than us, but they would compete in certain fields. So, say, for example, you have a Vietnam. Vietnam is a much smaller economy. But the fact is, Vietnam competes when it comes to certain kinds of investment. Okay. So, the bottom line, I think what the young people need to know is that today, it is all about building strengths. That when you say make in India, when you say startup India, when you say Gati Shakti, nobody is going to manufacture in India if your infrastructure is lousy. Okay. So they need to see the smart ports, the good roads, the rapid movement of goods. If you have to do all this, if you really need to create jobs, to me, at the end of the day, it's all about creating jobs and opportunities. There are many roads to it. Even foreign policy, I would say, especially foreign policy, is one road, which is our job is also to market India, to brand India, to make India a magnet so that the rest of the world says, okay, these are responsible guys, these are safe guys, let's go and do business. They're not going to steal your stuff. Okay. Basically chase excellence, create employment. Absolutely. And as we move forward in this chase of individual excellence, you will achieve national excellence. Absolutely. Okay. Absolutely. In the sport of global, in the global sport of geopolitics. Absolutely. All right. Well said. When you meet one of our rival nations' foreign ministers, like we saw you doing the Namaste to Bilawal Bhutto, what is your interaction with him, which the news doesn't capture, which only podcasts can potentially capture? And what's your interaction like with, say, the Chinese foreign minister if you meet him? Diplomacy is an art of detail in a way. Okay, there's a lot of nuance, body language, how you dress, what you say, how you look, how you hold your hands or don't hold your hands. So all of this counts. It depends on the person. It depends on the situation. It depends, the context, national the relationship. Yes, that also. Okay. So you try to use. It's a bit like a choreography. So you use that occasion to do the signaling. I could modulate it depending on that. So it would depend on the situation. So there are times and occasions. So I wouldn't say there's a single formula. Okay. Very raw question for you. Oh, please. So pardon me if I'm crossing a line. No. What's the most pissed off you've gotten at one of these meetings? I'm sure something would have been said that just irritated you as a human being. And what was your response? And you don't need to name, or you can name if you wish. Rarely by personal things, because mostly I've learned to absorb it. I take it's par for the course for me. Okay. So, what happens is things do get under my skin, and I give you a recent example. I've spoken about it. I was actually landed, I forget, from Bangalore or something on a plane, and I saw this picture of this guy climbing up the Indian High Commission in London and trying to pull down a flag. So absolutely, it got under my skin. So, or if people, they try and score points, I personal points, I just shrug it. Okay, I put. But if I feel in some way the collective I, in some way is demeaned or attacked or something, yes, that's when I said, when I get pushed, okay. That I, as you rightly said, is not me the I, but I the India. But that sense that somewhere, if you're not given the respect, or you're not, if your people are condescending, or sometimes people ambush you. okay. And professionally, when do you feel the most alive? Like, when do you feel that you were born to do exactly this? That's a feeling which kind of grew on me over a period of time. Part of it was, I actually studied international relations, which is not that usual for people in diplomats. Now, I'm only the second foreign minister who's actually been a diplomat. Natwar Singh was the only other guy who'd been in that. So, in a sense, my studies, my first long profession, my current
my current responsibility. And even I had a brief break in business. Even that was international. I was with the Tata Group, and they gave me a kind of role in international business. So I've been in that sense, that feeling that you're bound to do this, frankly, has grown a lot. And in a way, I also came from a household which was very international. I live international. I mean, my family relationships are international. I spend most of my time international. So I guess it's sort of in you. Okay. But at this stage of your life, is there any moment? Occasionally, I do give lifestyle advice to younger people. Rarely, mostly when they ask. Okay. I don't dispense otherwise. I tell people, look, if you really like doing something, you'll be very good at it. The problem with most of us is we end up doing things which is not necessarily what we want to do. It's what we're told to do. It's what we're told to do, or circumstances make. Sure. Okay. So for me, look, I always liked reading about the world. I like listening to music of the world. I like eating global food. Sometimes consuming YouTube podcasts. It's been a mix of all of that. So that what you say, we are bound to do it. Yeah, sure. I mean, all of this gets into that. Yeah, it's a natural. Okay, all right. Yeah. This is a question that comes from the engineer inside me. Are you following the AI revolution based on whatever's happening in the world? I'm sure you are. I mean, that was just an intro to the question. Okay, that's podcasting techniques. Let's talk a little bit about the role of AI. I would love for you to also give an input on the role of quantum computing, because it's come up in geopolitical conversations. How do you look at it from your perspective? The future of technology. I don't know if you should watch this show called Black Mirror. No, I haven't. Okay, it's about the technologies that are upcoming. And Yuval Noah Harari says that the stuff they've shown in Black Mirror is so realistic, it's either already happening or it's going to happen in 5 to 10 years. Or it'll happen once you watch the show. Possibly. Because science fiction determines where science goes. But do you follow whatever's happening in the world of engineering technology, and how do you look at it affecting our country, our foreign policy, etc., etc.? I'm not an engineer, and I'll give you what I hope is like a common sense answer from my perspective. And I'll take you back actually to your first question. Sure. You asked me, do I watch patterns? Okay. Sure, I watch patterns. That's how I do my business. That's why I think I can be good at my business. Now, just imagine, I am humanly, because I have limited capabilities as a human being, I'm watching the patterns of 200 people who I deal with every day. Imagine if I could process the patterns of 200 million people. Okay. That's the world which you are talking about. But with each one of us, we are like a walking emitter of electronic patterns. Okay. What you download, what you say, what you listen to, what you buy, what you eat. You're creating, earlier on, there would have been a pattern, but you couldn't see it. Okay. Today, that pattern is organized. It has actually become a business. It has become politics. It has become strategy. It is actually, at the end of the day, this how do you sort of mega process patterns? And that then gives you a fantastic edge. So, imagine a Virat Kohli who has at his fingertips everything about everybody is ever going to be batting against. Man, that's a dream world, isn't it? Be able to predict each delivery, each strategy. So maybe the way we should build out artificial intelligence as humans is we should develop an AI-based assistant for you. For you to be able to, that's Don't worry, it'll happen. Or is it already happening? You never know. Okay. How often do quantum computing conversations come up? Because it's come up on the show from a geopolitical perspective. The first country that cracks it will... Right now, actually, if you ask me what's right on our plate, it's much more semiconductors. There's this whole chip war which is going on. You can say a tech war which is going on. So a lot of what we are doing today is about that. And it's about how do you actually prepare for an era where, sort of
chips, you can say, is the new oil. And in fact, I was a week ago in Europe, and thereafter with the PM at the Quad in Japan. And a big part of those conversations were really about how countries cooperate to ensure what we call trusted collaboration, which is countries who have that faith in each other, who have similar systems. We use the word like-minded. These are normally market economies, democracies, how people with companies who follow company ethics and rules, like we know. How do these countries really come together and create a kind of a supply chain? Now, here's the bit which I think particularly your younger listeners should look at. There was a time 10 years ago, maybe now 7-8 years ago even, I used to go around telling people, saying, look, you need to open up your economy more, mobility. There's Indians who would be looking for opportunities to work, because we really start, especially under Prime Minister Modi, one thing he keeps dinning into us, think of the world as a global workplace. Okay, this is one regular message we get from him in every possible way. As a global workplace? Global workplace. That don't think, your work opportunities could be anywhere. Now, it's your job in foreign policy to open up those doors. Okay. Why should a talented Indian be restricted? Okay. Now, if you are going to work everywhere, and this doesn't have to be rocket science, okay? I mean, you have people working in merchant shipping and air crews, in blue-collar jobs, in professional jobs, as chartered accountant. Any profession you take, how do you actually give a full kind of space for Indian talent to do its best? Now, coming back to this, I find because today we are moving into that tech competition or tech wars era, there's a huge demand today for trusted talent, for people who play by the rules, who understand how the international business systems work, skilled people, talented people. And these are the age group, we are looking at kind of below 35s. They are massively in demand in the world. And we just came out of Australia. We did a mobility agreement. The week before, I signed one with Austria. Austria, is not a country which you would immediately think of in terms of migration. Done it with Germany, with a number of European countries, and even with the US. Prime Minister is going to be going there next month. A lot of it is, look, how do we create the flows? Now, these kind of flows are going to be very different. It's like the world. You are very familiar, perhaps more than me. Your habits change. People don't have to leave India anymore to work somewhere. The global workplace doesn't mean you shift your place. It just means your employer doesn't have to be in the same town or the same country, or the service you render doesn't have to be there. So that's the kind of world, we are getting prepared for. So for me, if you look at the tech space, the global workplace, the mobility, the semiconductor, the what called critical emerging technologies, this is really what is sucking up the oxygen. When I was growing up in the 2000s and early 2010s, you'd often go for family functions where the families would encourage the kids to leave India. And that used to piss me off when I was a kid. Why do you want to leave your country? Let's do something for the country. Maybe that's just the cricket fan in me talking, but it led me in the right direction. More than half of all the engineering students with me in college left the country. A lot of them wish to come back. I want you to directly address those people who are on the fence about coming back. How do we reverse this brain drain problem? That's one part of the question. Two, please address the parents who still want their kids to leave the country. And please address the kids who want to leave the country for whatever reason. Look, I would define the issue differently from you. Sure. If you define it as, brain drain, here's our country, there is abroad, why are you leaving? You're making it a kind of choice which you may not necessarily get the outcomes you want. Okay. I put it to you very differently. It's, the world's like a kind of a membrane. You can go in and out.
And actually, that's what's going to happen. I see, I've actually encountered a lot of people who do a job, go abroad, do a job, come back, go again abroad. The days when you said, oh, if I leave a foreign country and come back to India, oh my God, maybe I'll never go back again. Now that's no longer the case. So what you say, yeah, sure, maybe 10, 15 years ago, that's the way the world was. I think we need to today recognize that, there was a time when you said a short-term job is what is the employer's preference. For a lot of people today would actually say, okay, let me take this, but I'm not sure I'm going to commit my entire life to this. That's also happening. So the job is changing, the people are changing, mobility is changing, global economy is changing. I think you're going to see a lot of this up and down, movement. And people will also realize in many industries that actually you may get an opportunity in India, which may be better than an opportunity abroad. Yeah. Sure. We have too many Indian Steve Wozniaks sitting in America right now who've studied, gained experiences of working in tech there. We have a lot of Steve Jobses in India who are looking for Wozniaks to come back here and build the kind of companies that we're seeing built out in Silicon Valley. So, do you have anything to say about that? Is that correct thinking? Look, I've been to Silicon Valley a few times. I see changes even in Silicon Valley. Silicon Valley today is much more interested in the valleys of India. That's also happening. So it's not like escape to Silicon Valley and guys, now I found Nirvana. Anymore. Sure. I think you're seeing a lot of people, out there coming back. After all, look, even for people out there, when they now see, you take the example of Apple, okay? You know why it's been an important event is it's had a very strong resonance at different levels. It's had a resonance in manufacturing. It's a kind of validation of an improved business atmosphere. It's also, by the way, a testament to the quality of people they find. Now, this wouldn't have happened 10 years ago. So it's a very good example. Look, I can always tell anybody, everything is much better 10 years. Now you'll say, okay, show me the proof. To me, that's a proof. When you actually have good global companies, and the other interesting thing is when you have Indian companies, the big ones, who are actually now saying, maybe I'm going to invest a bit more in India. I don't need to necessarily hedge by going out. So that too is a factor. So things are happening. Okay. Why are you doing this podcast? I'm doing this podcast, one, because I like you. But two, I'm also doing it because I feel today you need to get people to understand what we are about, what the government's about, what the world is about. And different people absorb differently. Okay. There's still people, the beauty with India is you have 20 different mediums spread over 200 years. All of them are still working. It's like having an old model that's also working, and the latest gizmo is also working. So today, Man Ki Baat also works. Okay, newspapers also work. But it's who you're talking to. Okay. So, this is a different set of people I'm talking to, a different generation of people I'm talking to. I would love to believe that my podcast audience is the one that wants aggressive growth. It's the Virat Kohlis of the future of this country. I hope so. So, considering that these are all extremely aggressive leaders, one last question for you on this chat, and I hope it's the first chat of many, many more chats that we have eventually. What's your message to all the young Virat Kohlis watching this and young Jemima Rodriguez watching this who will take the country further? I'm so glad you used the second name because I actually this year got really, it's something which I followed for some time, but I think when I watch the women's league and I find that's something
which is also really, it's like watching a new emerging kind of activity. But Vikings would always invade with the women as well. Okay, all right. We need to be Vikings now. Anyway, let's go on. You notice I'm not disputing it. But look, my message would be different era have self-belief. I mean, the kind of opportunities, the possibilities of this era are very different. I think today it's very important at one level. I spoke about thinking big and thinking kind of practical, deep detail. Similarly, I would say we need to look at the big choices we make, the national choices we make. We need to look at the personal choices we make. They're not divorced from each other. A good, sound national choice actually widens your personal choices. And look, anybody with age wants to be younger. Okay, it's a natural feeling. But truly, for someone who's today, say 20, there's a world waiting out there to happen. And I think it's the obligation of people like us to sort of open that up as much, to prepare it as much, to create that kind of favorable ground. And when maybe in the next chat we should do this. Actually, you look at Indian cricket and Indian diplomacy. I think there's a lot that they could learn from each other. That could be a subject in itself. Wow. Okay. So many more tangential questions just related to that thought. One last question. There's also a lot of YouTubers, and I would like to say extremely early thought leaders. Maybe we are, because we do influence a large mass of people. What's your message for them? What role do we have for our country? Look, I think today you honestly don't have to be experienced, which is another nice way of saying a little older, to lead. Leadership can come from a young person. Conversely, there are people who may be older, who would relate to a young person precisely because they have that kind of confidence. I was very struck. I was reading something which P.V. Sindhu had written, and one of the points she made was, how is it that Narendra Modi is today a youth icon? Why is he a youth icon? It's a very interesting question. It's worth thinking about. So I think that's a good note to end this session. So I too look forward to another one at some stage. I've given you an idea today, but always open to your thoughts. Dr. Jaishankar, honor of my life. That's all I will say. Thank you for everything you're doing. The whole I is India conversation. Mm-hmm. We all know that secretly. The youth is obsessed with geopolitics nowadays. Thank you, sir. Means a lot. Looking forward to talking to you again. If I may be able to do so, I would like to fist bump you and say thank you, sir. Thank you. Learning from you every day. That was the episode for today, ladies and gentlemen. Big tick mark on my own career objective sheet. This is a legend. I just spoke to a legend. Trust me, it took time to sink in. Like, it was just a 45-minute conversation, and I know that the next time I meet him, it's going to be a 2-hour conversation. We're going to go much deeper. We're going to cover many more topics. I'm going to ask him a lot more questions that Abhijit Chavda, Rajiv Malhotra, Abhijit Iyer Mitra have raised in my mind, but that's for the next time. For now, I request you to share this episode as much as possible. More cabinet minister interviews are coming up. Thanks to MyGov India helping TRS crack these conversations. Please give me your feedback, ladies and gentlemen. I want to know what you thought of this conversation. I want to know what we can improve. And I want to know who else you'd like to see when it comes to this political phase of TRS. I always try bringing out the human side of the person. And I hope that you enjoy these conversations as much as I enjoy creating them for you. Lots of love to you guys. Lots of gratitude. Dr. Jaishankar will be back on TRS. Lots of love and gratitude and Peri Bona to him. Thank you, sir, for everything you do for the country. I hope to see you soon. Was an honor speaking to you. And it's always an honor creating episodes for you guys. Ranveer,
We'll see you soon, everybody. जिसने जम के बदमाशी बचपन में ना की हो वो शांत हो नहीं सकता। इसलिए मेरा मानना है कि जो बच्चे बहुत सीधे हैं वो बच्चे नहीं हैं। एक बच्चे को ऐसा होना चाहिए कि वो छठी का दूध याद दिला दे पेरेंट्स को, टीचर्स को। तो मैं वैसा ही था। स्कूल लाइफ में एक बार ऐसा हुआ था कि झगड़ा हो गया था एक लड़के से, तो फिर 15-20 दोस्तों को ले जाके उसको पीटा था बहुत। तो ऑर्गेनाइज गुंडागर्दी आप कह सकते हैं, पहली बार 7वीं-8वीं क्लास में की थी। आदमियों के लिए बहुत मुश्किल तो ये है कि किसी के दुख में हंसे बिना कैसे रहें। इसलिए कहीं किसी की डेथ हो जाए, आप बिहेवियर देखिए आदमी और औरत का। वहाँ महिलाएं जब जाती हैं जी, वहाँ कई महिलाएं बैठी हैं, आराम से बात कर रही हैं। एक और महिला आई, सब मिलकर रोती हैं जी। एकदम ऑर्केस्ट्रा की तरह से चलता है। तो वो जो महिलाएं शांति से बैठ के बात कर रही हैं, एक की और आती सब कैसे रोने लगती है मैं नहीं समझ पाता, क्योंकि उनका अपने इमोशंस पे ऐसा कैसे कंट्रोल है। तो अच्छा, आदमी लोगों को आप वहाँ देखेंगे 1-8 मिनट हाथ रख के बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा लग रहा है। फिर 6-7 आदमी जहाँ बैठेंगे 2-4 मिनट चेहरा नीचे करके सीरियस होंगे, फिर खुसर शुरू कर देंगे। हमारा काम ठीक चल रहा है। तो आदमियों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि उनकी परवरिश में उनको सिखा देते हैं कि रोना कमजोरी का लक्षण है। विकास दिव्या कीर्ति का हिंदी TRS एपिसोड आ चुका है। चाहे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, चाहे आप यूपीएससी फेलियर हो, चाहे आप यूपीएससी सक्सेस हो, या चाहे आपको बस स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशंस, गहरे कॉन्वर्सेशंस अच्छे लगते हैं, अगर आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हो, दोस्तों आ चुका है एक और TRS ऑल स्टार। विकास सर के साथ बहुत सारे एपिसोड रिकॉर्ड करने हैं, पर यह है हमारी पहली एपिक कॉन्वर्सेशन। दोस्तों एंजॉय कीजिए। ये है एक मॉडर्न डे फिलोसोफर। नमस्कार, लॉट्स ऑफ लव टू यू, लॉट्स ऑफ लव टू विकास दिव्या कीर्ति, एंड लॉट्स ऑफ लव टू भगवान। नमस्ते। विकास सर, आपका इस स्टूडियो में स्वागत है, TRS में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने बस बैठकर। मुझे भी तो ये अच्छा लग रहा है। आपको मैंने कई बार देखा यूट्यूब पर और मेरा मन था आपसे बात करने का कभी, सो आई एम हैप्पी टू बी विद यू। थैंक यू सर। ये मुझे एक तोहफा मिला था एक टिबेटन मंक से जी। ये एक बेल है और इसके साथ एक वज्र दिया जी। इस बेल का मतलब, उन्होंने कहा इस बेल का मतलब है विजडम, ओके, यानी कि नॉलेज, यानी कि सरस्वती। आई थिंक एक्सपीरियंस नॉलेज को हम विजडम कहते हैं। हाँ। और इस वज्र का मतलब है कंपैशन, यानी कि दूसरों के जज्बातों को जानना। और ये बेल मैं बहुत कम उठाता हूँ इस पॉडकास्ट में, पर आज उठाऊंगा इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में। थैंक यू, थैंक यू। व्हेन विजडम मीट्स कंपैशन। थैंक यू। बहुत कम लोगों में ये स्किल होती है, टू मेक विजडम मीट कंपैशन। दूसरों के दिलों को भी जानना और दूसरों को चीज़ें सिखाना भी एक्सपीरियंस के थ्रू। लोग बहुत शांति से बैठकर आपकी बातें सुनते हैं, तो बहुत रॉ सवाल है, पर क्यों, आपके अकॉर्डिंग क्यों? मतलब अगर बात स्टूडेंट्स की हो रही है तो सरप्राइजिंगली उसके पीछे मेरा व्यू ये है कि मैं स्टूडेंट लाइफ में बहुत ख़राब स्टूडेंट रहा हूँ। बहुत ख़राब मतलब अच्छा नहीं रहा हूँ, बहुत ख़राब तो शायद नहीं था। तो जब आप सबसे आखिरी बेंच पर बैठते हैं स्टूडेंट लाइफ में, सारी शरारतें करते हैं, बहुत सीरियस नहीं होते पढ़ाई को लेकर, आपके पेरेंट्स को आपकी चिंता बहुत ज़्यादा होती है कि ये कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और फिर जब आपको पढ़ने का शौक़ हो जाता है तो पढ़ाते समय मुझे ये अपने आप समझ में आता है कि सबसे पीछे बैठा बच्चा क्या नहीं समझ पा रहा होगा, क्योंकि मैं उस फेज़ को लंबे समय तक जी चुका हूँ। सो मे बी आई हैव एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट ही और शी नीड्स। वहाँ से बात को शुरू करना। फिर मुझे मेरे पेरेंट्स ने बचपन से डिबेटिंग में उतारा
स्कूल के मंच पर, तो 2000 बच्चों के सामने मैं स्कूल टाइम में खूब डिबेट्स बोलता था, पोइट्री बोलता था। वो जो एक्सपीरियंस मिलता गया, फिर मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत डिबेटिंग की और मतलब स्टेज एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा की। मुझे लगता है कि उन एक्टिविटीज़ ने मुझे बोलने का तरीका सिखाया। हंसी मजाक करना मेरी बचपन से आदत रही है, फितरत रही है। तो बोलने का कॉन्फिडेंस, हंसी मजाक करने की क्षमता, सबसे कमज़ोर बच्चे के मन में क्या दुविधाएं होंगी उनको समझ पाना, और फिर अंत में मेरा स्वधर्म जो है, जिसको गीता में कहते हैं कि आप वही काम सबसे अच्छा करेंगे जो आपका स्वधर्म है। मुझे लगता है कि मेरा स्वधर्म दरअसल पढ़ना पढ़ाना ही है। सो व्हेन आई टीच आई फील लाइक आई एम इनटू ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। इस साल पेपर सबसे टफ पेपर था हाँ, सुनने में आया। प्रीलिम्स अभी जो हुआ कुछ दिन पहले, रिजल्ट्स निकले। हाँ, रिजल्ट्स आ गए। ओके, क्या आपको पता चल जाता कोचिंग के दौरान कि किस किस को सफलता मिलेगी और किस किस को सफलता नहीं मिलेगी? आइडिया लग जाता है। ओके। ये ठीक वैसे ही जैसे आपको पॉडकास्ट के दौरान अंदाजा हो जाता होगा कौन सा कितना चलेगा, जी। कुछ कुछ वैसे ही है। एक इंट्यूशन का लेवल आ जाता है कोई भी काम करते हुए, लंबे समय तक आप तो कोई काम करते हैं, सो यू गेट टू अंडरस्टैंड हु हैज द पोटेंशियल टू गेट थ्रू। आइडिया हो जाता है। कांग्रेट्स टू एवरीवन हु सक्सीडेड। पर जिन लोगों को सफलता नहीं मिली, पहले उनके दिल को एड्रेस करते हैं हम। आप एड्रेस कीजिए। इस बार का जो प्रीलिम्स का पेपर था 2023 वाला, वो अब तक का सबसे मुश्किल पेपर हम कह सकते हैं। मतलब 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ प्रीलिम्स, वो सबसे मुश्किल पेपर था। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है, 2 पेपर्स होते हैं, आपको शायद आइडिया हो। एक जनरल स्टडीज़ का है जिसके बेस पे मेरिट बनती है, एक सी सेट है जिसके बेस पे सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। जनरल स्टडीज़ का पेपर बहुत मुश्किल था। थोड़ा सा इस बार कंसेप्चुअल की जगह उन्होंने फैक्चुअल एलिमेंट ज़्यादा डाल दिया था। और उसमें चिंता की बात इसलिए नहीं होती कि जनरल स्टडीज़ में देखिए, जैसे 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 6 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, लगभग 5-6 लाख लोग, 12 से 15 हज़ार के बीच में प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। पेपर कितना भी मुश्किल आ जाए, क्वालिफाई 15 हज़ार ही करेंगे या 14 हज़ार ही करेंगे। तो पेपर मुश्किल आने से अल्टीमेटली क्या होगा, कट ऑफ कम चली जाएगी। टॉप 14,000 हैव टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स स्टेज। इसलिए वो पेन तो होता है कि बहुत मुश्किल पेपर है, बट अल्टीमेटली 14,000 हैव टू क्वालिफाई। ये हो सकता है कि एक सेगमेंट से क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, एक से ज़्यादा मुश्किल आ गए, तो जिनका उसमें कमांड थी वो फ़ायदे में आ गए, जिनके उसमें कमांड कम थी वो नुकसान में आ गए। बट जनरली 14,000 हैव टू गेट सिलेक्टेड इन द प्रीलिम्स। सी सेट क्या है कि वो क्वालिफाइंग है। वी हैव टू स्कोर 1/3 33% मार्क्स इन दैट पेपर। उससे मैथ्स आता है, रीजनिंग है और कॉम्प्रिहेंशन है। यूपीएससी पिछले 3-4 साल से मैथमेटिक्स का पोर्शन न केवल बढ़ा रही है, जो कि ठीक है, लेकिन वो एक अनुपात होना चाहिए ना। पहले क्या था कि 80 क्वेश्चंस में से लगभग 1/3 होते थे कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मैथ्स। सो इवन इफ ए स्टूडेंट इज नॉट वेरी गुड इन मैथ्स, ही और शी कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज 27 क्वेश्चंस आर टू बी करेक्टेड। तो यूपीएससी ने मैथ्स का थोड़ा सा प्रपोर्शन बढ़ाया, बढ़ते बढ़ते वो करीब 40 क्वेश्चन तक आ गया 80 में से। वो भी लोग मैनेज करते हैं किसी तरह से, क्योंकि बाकी 40 क्वेश्चन तो हैं ही, और मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। इस बार जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं, आईआईटी के बहुत सारे बच्चों ने ये कहा मुझसे, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि पेपर देख के हमारे होश उड़ गए। बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी से बीटेक हैं, उनका सी सेट नहीं हुआ है। सच लेवल ऑफ मैथ्स क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन जो कैट के एग्जाम में आते हैं, एग्जैक्टली वो सवाल पूछे गए हैं। एक पिटीशन कुछ बच्चों ने लगाई कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, पर रिजल्ट आ गया है। तो उससे ये जो डिफरेंस आया इस बार, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सिलेक्ट हो चुके हैं ईएस में, मतलब आईपीएस में हो गए, आईआरएस में हो गए, एंड दे वर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर रैंक। बड़ा सरप्राइजिंग है। मैं करीब ऐसे 50 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने फिर से एग्जाम दिया आईआरएस आईपीएस बनने के बाद। उनमें से कम 30-35 का प्रीलिम्स नहीं हुआ इस बार। लेकिन अल्टीमेटली प्रीलिम्स तो हुआ ही है 14,000 लोगों का। तो ऐसे लोग जिनका मैथ्स अच्छा था, बाकी बहुत आइडिया शायद नहीं था एग्जाम का, उनका हो गया। तो मेंस में कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया इस बार। होना क्या चाहिए यूपीएससी को, मुझे नहीं पता क्या अप्रोच है उनके, क्या समझ है। प्रीलिम्स का एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट है, आप इतना मुश्किल कर देंगे कि बहुत सारे योग्य लोग वहीं खत्म हो जाएंगे।
इतना मुश्किल, और मुश्किल भी उन चीज़ों में जिनका यूपीएससी में करियर से बहुत लिंक है नहीं। एक बेसिक लेवल की डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, बेसिक मैथ्स, परसेंटेज, एवरेज, प्रोपोर्शन समझ में आता है, आना चाहिए। स्टैटिस्टिकल टूल्स आने चाहिए, समझ में आता है। पर अब आप नंबर सिस्टम के नाम पर कैलकुलस के लेवल के सवाल पूछेंगे जिनका कोई मतलब नहीं है उसके करियर से, और है भी तो इतना कि ट्रेनिंग में आराम से कोई सीख लेगा। तो मेरे ख्याल से वो पेपर बनाने वालों की पॉलिसी में या तो कोई अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक है, या इस बार एक एक्सीडेंट हुआ है, अगली बार शायद ठीक हो जाएगा। किसी का ब्रेकअप हो चुका है, उस कोई पीड़ा से गुजर रहा है और स्टूडेंट्स पर वो पीड़ा पास ऑन कर रहा है मुश्किल पेपर के थ्रू। हाँ, हो सकता है, ये हो सकता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि असल में बहुत कम लोग हैं जो डिटैच होकर काम कर पाते हैं। जी। जैसे अगर मैं ज़िंदगी में, जैसे आपका एग्जांपल ले, आपका ब्रेकअप हुआ कुछ दिन पहले जैसा आपने बताया, अब आपके मन में दो बातें हो सकती हैं। आपको जितना मैं समझ रहा हूँ आपके मन में दूसरी बात ही होगी, लेकिन मैं एक समझाने के लिए कह रहा हूँ। कुछ लोग इस माइंडसेट में आ जाते हैं कि मेरा हुआ है तो फिर कोई भी प्रेम ना कर पाए दुनिया में, कोई भी करेगा तो मुझे जलन होगी, चुभन होगी। ये वो स्थिति है जब मैं चाहता हूँ कि मेरा दुख हर आदमी का दुख बन जाए जी। और सुख के मामले में उल्टा चाहते हैं कि सबका सुख मेरा सुख हो जाए और दुख मेरा सबका हो जाए। इंसान के बड़े होने का मतलब है कि जब दुख हो तो वो अकेला झेले, सुख हो तो बांटे। तो मेरा ब्रेकअप हुआ लेकिन किसी और का ना हो जी। और मैं तो वजह ना ही बनूं, एक ये अप्रोच है। यूपीएससी के कोई भी एग्जाम हो, मैंने कई एग्जामिनर्स को, क्योंकि मैं टीचिंग की दुनिया में हूँ, डीयू में भी पढ़ाया मैंने कुछ समय तक, तो एकेडमिक्स के लोगों को जानता हूँ। कम लोग हैं जो अपनी कुंठाओं से बाहर निकल पाते हैं। बहुत लोग इस कुंठा में, फ्रस्ट्रेशन में जिंदगी भर रहते हैं कि मैं जो नहीं कर पाया था कोई और कैसे कर लेगा। और ये सैडिज्म होता है जी। सबकी जिंदगी में दुख पैदा करना और उसको एंजॉय करना। जी। मेरे ख्याल से सबसे गहरी ट्रेनिंग एकेडमिक्स में, एजुकेशन में ये चाहिए कि एक कायदे का इंसान कैसे बना जाए और बिना सैडिस्ट हुए दूसरों की खुशी में थोड़ी अपनी खुशी तलाशने की आदत हमें पड़ जाए तो बेहतर है। एम्पैथी की ट्रेनिंग, एम्पैथी जो शायद हमारे गुरुकुल्स में होता था। मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, मुझे आइडिया है नहीं कि उसका क्या करिकुलम था, लेकिन एम्पैथी की ट्रेनिंग घरों में भी होती है। अगर पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी, पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, तो एम्पैथी घर में भी सिखाते हैं। अगर दादाजी घर में हैं, दादी जी घर में हैं और बच्चों से कहते हैं कि उनके पैर दबाओ रोज रात को, अब इसको हो सकता है कोई वेस्ट के नज़रिए से चाइल्ड लेबर कहे या चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन कहे, पर मेरी नज़र में इससे बच्चा दो चीज़ें सीखता है। एक वो ह्यूमिलिटी सीखता है, विनम्रता सीखता है, और एक एम्पैथी सीखता है कि अगर मेरे दादाजी की टांगों में दर्द रहता है और मैं उनके पैर दबा रहा हूँ तो एक तो मैं आधा घंटा उनके साथ गुजार रहा हूँ, दूसरा मुझे ये समझ आ रही है बात कि मेरा जीने का धर्म केवल मौज करना नहीं है, सेवा करना भी मेरे जीवन का एक हिस्सा है, और मैं उनके दर्द को नहीं बांटूंगा तो कौन बांटेगा। तो और एक विनम्रता, अगर जैसे मैं टीचर हूँ, कई बच्चे मेरे पैर छूते, मैं अच्छा नहीं फील करता हूँ, मैं उनको मना करता हूँ, पर इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस मैं ये बिलीव करता हूँ कि पैर छूना अपने आप में एक बड़ा ज़रूरी कदम है, स्पेशली बच्चों के लिए। उनको झुकने की आदत रहनी चाहिए, और पैर में झुकना हम सिंबॉलिकली ये मानते कि आप व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सम्मान जो दे सकते हैं वो पैर छू के दे रहे हैं। और पेरेंट्स को कम से कम इतना सम्मान मिल जाना कि मेरा बच्चा मुझे अप्रिशिएट करता है, कम से कम थैंकफुल है, ग्रेटिट्यूड है, ये इमोशनल बॉन्डिंग तो है, एम्पैथी तो है। और इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट वेस्ट में 20-25 साल पहले आया, लेकिन ये तो अतीत में कब से चल रहा है। जब बुद्ध कह रहे थे कि करुणा ही है जो संसार को जोड़ती है, जब भवभूति उत्तर रामचरितमानस में एको रस करुण एवह कह रहे हैं कि दुनिया में एक ही रस है, वो करुण रस है, तो ऐसा थोड़ा ना कि एम्पैथी की ट्रेनिंग पश्चिम से में सीखनी पड़ेगी। एम्पैथी तो अतीत में कितनी बार, वाल्मीकि हमारे संसार का पहला कवि, पहली बार कवि क्यों बना? ट्रोंच पक्षी का जोड़ा खेल रहा था, एक शिकारी ने एक पक्षी को मार दिया, अब प्रेम में रत पक्षियों में से एक नीचे गिरा। वो जो मोमेंट है, उस मोमेंट में दुनिया का पहला कवि बना है। वेदना कितनी हुई होगी, पीड़ा कितनी हुई होगी, और
उन्होंने तो लिखा माँ निषाद प्रतिष्ठान तो मगवी शाश्वती समा, एक संस्कृति पंक्ति आती है जहाँ से रामायण की शुरुआत होती है। इसी पर छायावाद के कवि ने, छायावाद इज 1918 to 1936, उसमें एक कवि ने लिखा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। पहली कविता तो आह से पैदा हुई होगी और आंखों से बही होगी। कविता लिखी थोड़ा ना जाती है, कविता तो बहती है आंखों से और जुबान से बहती है। कालिदास ने मेघदूत लिखा। मेघदूत में यक्ष है, यक्षिणी है, उनके प्रेम की कहानी है, विरह की कहानी है। पर एक कवि है नागार्जुन, उन्होंने कालिदास पे लिखा और कहा कि एक पंक्ति आती है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष के तुम रोए थे। यक्ष नहीं रोया था, यक्ष की आंखों से जो बह रहा है, कालिदास तुम्हारे आंसू हैं। और नागार्जुन कवि कह रहे हैं कि मैं पहचान रहा हूं कि आंसू तुम्हारे हैं। और कवि होने में और लेखक होने में ऐसा होता है। और ये बात ठीक है, एम्पैथी ना हो, अल्टीमेटली इंसान होने का सबसे गहरा मजा तो इमोशंस में ही है। और यदि आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हो दूसरों के साथ, और कनेक्ट करने का मतलब है उनके दुख में उनके साथ खड़े होना। आई होप कि वो पेपर सेटर्स ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं ताकि अगले साल आसान पेपर निकल मतलब के। आसान पेपर से भी सिलेक्शन उतने ही होंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी अंतर सिर्फ है कि सीसेट के पेपर में, क्योंकि वो क्वालिफाइंग है और आप बहुत अच्छे बच्चों को बहुत मामूली वजह से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, ये थोड़ा चुभने वाली बात है। ओके, पर फेलियर्स को थोड़ा एड्रेस करते हैं सर। बहुत सारे लोग, मैं उन्हें इतना ही कहूँगा कि जो इस बार पेपर था सीसेट का, अगर आपका मैथ्स बहुत खराब है तो बस अगली बार से इतना ध्यान रखें कि सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन के ही सवाल करें, नंबर 2 पर रीजनिंग के सवाल करें, प्रैक्टिस करें कि पहले इनके सवाल कैसे करने हैं। और किसी भी हालत में 35 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं जी, आउट ऑफ 80। सो इफ यू कैन डू 31 क्वेश्चंस आउट ऑफ 35 राइट, यू आर थ्रू। और ये इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ तक कि 35 क्वेश्चन में 30 भी ठीक कर देंगे और बाकी 45 क्वेश्चन छोड़ भी देंगे, तब भी क्वालिफाई कर लेंगे। और जो लोग इसे अपना लास्ट अटेम्प्ट मानते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहूँगा कि या तो मैथ्स सीख लें, अगर मैथ्स में दिक्कत बहुत ज़्यादा है तो रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन में खूब प्रैक्टिस करें। इतनी प्रैक्टिस करें कि वो, क्योंकि क्या होता है कि 80 क्वेश्चंस 120 मिनट में करने हैं तो यू हैव 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन। बट इफ यू डिसाइड दैट यू विल अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चंस, देन यू हैव 3 मिनट्स पर क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन में 3 मिनट लगाने का चांस मिल जाता है। और वो 2 ही सेगमेंट्स करें, 40 ही क्वेश्चंस करें। जब क्वालिफाई ही करना है 27 क्वेश्चन ही करने हैं। होता क्या कि मैथ्स के क्वेश्चन जिन्होंने उठाए इस बार पहली बार, मुझे एक IIT के बच्चे ने बताया कि 8 मिनट पर क्वेश्चन की एवरेज इस बार आ रही है जो सॉल्व कर रहे हैं। इतना मुश्किल पेपर है। अब क्वेश्चन पेपर की डिमांड है 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, आपके क्वेश्चन का लेवल 8 मिनट वाला है, तो जो मैथ्स में उलझा जनरली फंस गया। सो आई विल सजेस्ट थ्रू योर पॉडकास्ट कि कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग के क्वेश्चंस को चुन चुन के पहले सॉल्व करें जल्दी से जी। 1.5 घंटे के अंदर 40 क्वेश्चन कर लें। उसके बाद मैथ्स के वो क्वेश्चंस करें जो उनको आते हैं। एंड इफ यू कैन अटेम्प्ट 40-45 क्वेश्चंस, इट्स फाइन। ओके, अगर आप पेपर सेटर होते हैं, या नॉट इवन पेपर सेटर, अगर आप पूरे UPSC को हेड कर पाते जी, आप पूरे सिस्टम में क्या चेंजेस लाते सर? पूरे सिस्टम में, आई एम श्योर दिस इज समथिंग यू थॉट अबाउट एट सम पॉइंट। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी डे अबाउट दिस। क्योंकि देखिए, पहली बात, UPSC सच में एक बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूशन है, इस पे कोई मतलब किंतु परंतु का मामला नहीं। आप ये जानते हो कि आप देश के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो इस डोमेन के ना? आई नो, तो जो आप बोलोगे, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ जी। और मुझे ये भी ध्यान है कि 2014 के मूवमेंट में मैंने UPSC के खिलाफ खूब जम के बोला था, कई TV चैनल से बोला था, कहा था कि UPSC इज नॉट ए डिवाइन इंस्टीट्यूशन। मैं अपनी बात पे कायम हूँ, डिवाइन नहीं है। और ये बात सही है कि UPSC इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। क्योंकि क्या होता है, जब आप सिस्टम चलाते हैं तो दिक्कतें अलग होती हैं। सिस्टम को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। सिंस आई एम रनिंग एन इंस्टीट्यूशन ऑफ माई ओन, हम लोग 1500 लोग काम करते हैं दृष्टि में, हम लोग मिलकर चलाते हैं इंस्टीट्यूशन। क्या होता है कि आलोचना करना इतना आसान काम है, आप कोई भी एक लूप होल ढूंढेंगे, आलोचना कर सकते हैं। और सिस्टम को चलाना इस तरह से कि उसमें एक भी लूप होल ना हो, बहुत मुश्किल काम होता है। सो व्हेन आई
एम्पैथाइज विद द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी एज वेल, तब मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, जनरली वो कोशिश करते हैं चीज़ें ठीक रहें, एक्सेप्ट कभी कभी उनके कुछ मेंबर्स की राय ऐसी होती है जिससे हम एग्री नहीं कर सकते। जैसे 2008 से 14 के बीच में यूपीएससी में बहुत चेंजेस हुए, ड्रास्टिक चेंजेस हुए, जो मैं आज तक मानता हूँ कि वो ठीक नहीं है। उनमें कई चेंजेस सीधे सीधे इंडियन लैंग्वेजेस के खिलाफ थे, नहीं होना चाहिए। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी है, हिंदी है, मराठी है, तमिल है, किसी को नुकसान क्यों होना चाहिए? शहर का बच्चा, गांव का बच्चा, किसी को नुकसान क्यों होना चाहिए? पर जब आप कुछ ऐसी चीज़ें इंड्यूस करते हैं जो सीधे सीधे किसी को नुकसान पहुंचाती हैं, तो सवाल उठता है कि ये गलत अप्रोच है आपकी। तो यूपीएससी इन जनरल इज ए गुड इंस्टीट्यूशन, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। उनको प्रीलिम्स में मैथमेटिक्स का जो मानिया उनके दिमाग में बैठा हुआ है और जो फोबिया बच्चों के दिमाग में, उससे थोड़ा सा बचना चाहिए, है ना। इतना मैथ जितना यूपीएससी के पास चाहिए, कि आईएएस को कितना मैथ चाहिए भाई जी? क्यों उसको बहुत गहरे प्रश्न मैथ्स के आने चाहिए? उसको इतना आना चाहिए कि वो टेबल्स, ग्राफ बना सकता हो, समझ सकता हो, कैलकुलेशंस कर सकता हो, कोई रिपोर्ट आई है कैलकुलेशन से चेक कर सकता हो, उसकी कैलकुलेशंस फास्ट भी हों, यहाँ तक समझ में आता है। डेटा इंटरप्रिटेशन कर सकता हो, डेटा सफिशिएंसी देख सकता हो, डेटा मैनिपुलेशन तो नहीं, लेकिन डेटा एनालिसिस कर सकता हो, ये सब पूछ लीजिए। लेकिन जानबूझ के इतना मुश्किल बनाना कि वो केवल वही लोग कर सके जिनका मैथ्स बहुत गहरा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग में ज़रूरी है भाई, अब वो पूछ ही रहे हैं। और सरप्राइजिंगली सी सेट में 2 सेगमेंट्स हैं, एक है इंटरपर्सनल स्किल्स और एक है डिसीजन मेकिंग। उस पर एक भी सवाल नहीं पूछ रहे 4-5 साल से। जबकि when you become an IAS or IPS officer, basically what you have to do is you have to take decisions, you have to communicate with the public. उस पर आप सवाल नहीं पूछ रहे, एक भी नहीं पूछ रहे सवाल। जबकि पहले 10 सवाल आते थे, 10 से 9 हुए, 8 हुए, उसके बाद 4-5 साल से 0 है। तो मुझे लगता है कि फोकस को लेके थोड़ा देखना है। मेंस उनका जनरली इस समय ठीक है, बस उसमें थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इवैल्यूएशन में, मॉडरेशन, स्केलिंग सारे सब्जेक्ट्स के बीच में, मीडियम्स के बीच में, मुझे लगता है कि स्केलिंग के मामले में थोड़ा सा वो कमज़ोर हैं। मीडियम्स के बीच में वो हो सके तो अच्छी बात है, किसी को फ़ायदा ना पहुंचाए लेकिन किसी को नुकसान ना पहुंचे, बेसिक बात सिर्फ है। इंटरव्यू इज सो सब्जेक्टिव। इंटरव्यू के लेवल पर तो मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, या तो रिसोर्सेज की दिक्कत है या पॉलिसी पैरालिसिस है। आप सोच के देखिए, इस बार जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, मैं तो करीब 70-80-100 बच्चों को जानता हूँ जो सिलेक्ट हुए हैं। कुछ पैनल्स हैं, 2 इंटरव्यू पैनल्स ऐसे थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा उनका भी, उनमें जो गया उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, क्योंकि वो वही सैडिज्म है, पता नहीं क्या है, अपनी कोई कुंठाएं हैं, बच्चों को नंबर देते ही नहीं है जी। आप सोचिए कि 6-7 पैनल्स यूपीएससी में है इंटरव्यू के, उनमें से एक पैनल ऐसा है जिसमें एक बच्चे को एवरेज मार्क्स 170 का सब मिल रहे हैं, और एक अच्छा बच्चा वहां जाएगा तो मान लीजिए कि 190 ले लेगा, वही बच्चा गलती से दूसरे रूम में चला जाएगा तो 150 लेके आएगा। और 40 नंबर का डिफरेंस यूपीएससी का मतलब होता है कम से कम 400 रैंक का डिफरेंस। एक नंबर पे 10-10 रैंक होते हैं यूपीएससी में, इतना सब्जेक्टिव है। फिर मैं वो कहूँगा, वो कोशिश करते हैं, वो मीटिंग्स करते हैं, अच्छा एवरेज सब पैनल्स की ऑलमोस्ट सेम आ जाती है, बस डिफरेंस का है डेविएशन में। अगर एक बोर्ड में सबको 160, 180, 160, 180, 170, 170 मिल रहे हैं और दूसरे में 130, 210, 125, 205 ऐसे मिल रहे हैं, एवरेज सेम आ गई जी। लेकिन आप किसी बोर्ड में जाएंगे तो 170 के ऊपर जा ही नहीं सकते, किसी में आपको 200 प्लस का स्कोप मिल जाता है, किसी में 130 पाने का रिस्क हो जाता है। तो मैं कई बार सोचता हूँ, अगर यूपीएससी मुझसे, खैर पूछते नहीं वो लोग, मैं तो चाहता हूँ कि सरकार पूछे मुझसे कभी, अगर पूछे तो। यहाँ जो मैं समझ रहा हूँ हाँ, वो ये है कि बहुत बड़ा ह्यूमन फैक्टर रहता है यहाँ। और सिंपल सॉल्यूशन है, आप 275 मार्क्स का एक इंटरव्यू ले रहे हैं, आप 100 के 3 कर लीजिए जी, 3 पैनल्स में इंटरव्यू करवा दीजिए। रिसोर्सेज की दिक्कत है, कुछ और मेंबर्स लाइए, टाइम बढ़ाइए, कुछ भी कीजिए भाई, ये देश का भविष्य है, किसी बच्चे का भविष्य है। आप केवल कुछ रिसोर्सेज बचाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को आईएएस बना देंगे जो अगले 35 साल तक परेशान करेगा आपको। इससे बेहतर है कि आप 3 इंटरव्यू ले लीजिए, या एआई लाइए एक ही इंटरव्यू में, एक एआई बॉट लाइए
जो हो उन सकता है आगे चल के इंटरव्यूअर्स ऐसा को भी हो। रिप्लेस कर हो सके। सकता है आगे चल के ऐसा हो। बूम। नहीं मस्ती कर रहा हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ हर इंटरव्यूअर की, सेडिज्म को भी रिस्पेक्ट करता हूँ इन सम वेज। मैं समझता हूँ जो कष्ट आपके दिल में, आप बेसिकली स्टूडेंट्स पर वो कष्ट फेंक रहे हो, पर सॉरी। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो मेंबर्स जानबूझ के नंबर कम दे रहे हैं, उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है। जैसे आप स्कूल में जब पढ़ते होंगे, जी, कुछ टीचर्स का मार्किंग पैटर्न काफी लिबरल होगा, कुछ का बहुत टफ होगा। जो जिंदगी में खुश थे उनका लिबरल, मतलब वो भी एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। Okay. ऐसा हो सकता है कि जिंदगी में खुश है और उसने बचपन में देखा कि सबसे अच्छे आंसर पे 10 में से 6 नंबर मिलते हैं, तो उसके दिमाग में बेंचमार्क 6 का बना हुआ है, वो 6 के ऊपर जाता ही नहीं है। जी एक दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि जिंदगी में बहुत खुश ना हो, पर बेंचमार्क उसके दिमाग में 8 का बना हुआ है, जी, वो 8 तक जाता है। और इतना सब्जेक्टिव है कि यूपीएससी मेंबर्स को कितना समझाए कि बराबर करो। इसका सॉल्यूशन सही बात यह है कि आप एक इंटरव्यू के बजाय 2-3 कर लीजिए, तो कम से कम जो स्कोप ऑफ सब्जेक्टिविटी कम हो जाएगा। ओके। ये बात एसए में भी हो सकती है। एसए में सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, सो मे बी दिस पेपर कैन बी इवेल्युएटेड बाय 2 एग्जामिनर्स सेपरेटली। ऐसा कुछ कर लें। ओके, मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है आपसे बात करके। आपकी एनर्जी ऐसी है, शायद इसलिए आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है हो सकता है कि जब आप किसी रूम में एंटर करते हो आप सुकून के साथ एंटर करते हो। शायद। आपका बचपन कैसा था सर? जैसा होना चाहिए एक बच्चे का, ठीक वैसा। ऐसे ही थे आप? नहीं, बहुत शरारती, बहुत बदमाश। ओके। देखिए, एक कहावत है, हर साधु का एक अतीत होता है, उसे भी ध्यान रखना चाहिए। कोई साधु पैदाइशी नहीं होता। साधु बहुत बड़ा शब्द है, मैं खुद के लिए नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिसने जम के बदमाशी बचपन में ना की हो वो शांत हो नहीं सकता। इसलिए मेरा मानना है कि जो बच्चे बहुत सीधे हैं वो बच्चे नहीं हैं। एक बच्चे को ऐसा होना चाहिए कि वो छठी का दूध याद दिला दे पेरेंट्स को, टीचर्स को। तो मैं वैसा ही था, बहुत बदमाश। बदमाश मतलब नॉट इन नेगेटिव सेंस, लेकिन इनडिसिप्लिन करना जितना बच्चे करते हैं वैसा करना, एडवेंचरस, लड़ाइयाँ भी करना, और ऑन द सेम लेवल स्टेज पे खड़े होना 2000 बच्चों के सामने, डिबेटिंग करना। स्कूल का इलेक्शन मैंने लड़ा, जीता। पूरे स्कूल में एक माहौल इस तरह का बनाना, इलेक्शन कैंपेनिंग करना, हर क्लास में जाके बच्चों से बात करना, स्कूल में हीरो बन जाना, कभी कभी जीरो बनना, वो भी सब चीज़ें। टीचर से बहुत पिटना, कई हजारों बार मुर्गा बनना, वो सब भी किया। और हजारों बच्चों के सामने पुरस्कार मिले, ये भी कई बार। तो बहुत डाइवर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की बचपन चाइल्डहुड रही है। कुछ गलत किया आपने जिंदगी में? बहुत सारी चीजें। ओके। बहुत सारी। सबसे बड़ी गलती क्या थी? ऐसे कभी लिस्ट बनाई नहीं इस तरह से, लेकिन स्कूल लाइफ में एक बार ऐसा हुआ था कि झगड़ा हो गया था एक लड़के से, तो फिर 15-20 दोस्तों को ले जाके उसको पीटा था बहुत ज़्यादा। तो ऑर्गेनाइज गुंडागर्दी आप कह सकते हैं, पहली बार 7वीं-8वीं क्लास में की थी। ये कहाँ की बात कर रहे हो आप? मैं हरियाणा में भिवानी एक शहर था, वहाँ रहता था। फिर उतना ही पिटा भी था घर पे आने के बाद, जब घर पे सूचना मिली। तो वो सब चलता था। लेकिन ऐसी कोई गलती जो बहुत रिग्रेट वाली हो, मुझे बहुत नजर नहीं आती। ओके। उस लड़के से आप मिलो उसके बाद? नहीं, उसके बाद नहीं। शायद वो पॉडकास्ट देख रहे हैं आपका। हो सकता है, देखिए। आज तक खुन्नस के साथ आपके वीडियोस देख इसने मारा था, पर इस पॉडकास्ट देखकर उसे अच्छा लग रहा है। बहुत अजीब सवाल पूछना चाहूँगा, मतलब मैं ये जानता हूँ, बट ये मैं आपके दिल की बातें जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको इतने व्यूज मिलते क्यों हैं आपके अकॉर्डिंग? इतने सारे लोगों ने डिमांड किया कि आपको लाना है पॉडकास्ट। अच्छा, मुझे इस बात का आइडिया नहीं है। अच्छा। मतलब बहुत बहुत सारे लोग चाहते थे, मतलब हम कमेंट सेक्शन बहुत ज़्यादा स्कैन करते हैं और जब भी किसी का नाम दिख जाता है एक एक्सेल शीट बनाते हैं और उस शीट में आपका नाम सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड होता है। अच्छा। हमेशा। क्यों? आपके अकॉर्डिंग क्यों इतना ज़्यादा प्यार? मतलब मेरे जो वीडियोस यूट्यूब पे हैं जनरली काफ़ी लंबे वीडियोस हैं,
फिलॉसफी पे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे हैं। तो एक तो ऐसा ग्रुप है जिसको स्कूल कॉलेज में इन विषयों पर पढ़ने का मौका नहीं मिला और उसको पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे मुझे कई लोग मिलते हैं, मैसेज करते हैं। दूसरा, मेरी क्लासेस बहुत सारी हैं जो यूट्यूब पे हैं, उनमें हंसी मजाक बहुत ज़्यादा होता है। तो हंसते हंसते कोई इंपॉर्टेंट बात बीच में आ गई, उसकी रील्स बन गई। ऐसे हज़ारों चैनल्स हैं जो रील्स बनाते हैं, मैं नहीं जानता हूँ कौन है। तो उससे क्या होता है कि वो रील जब बच्चे बार बार देखते हैं, फिर एआई काम करता है इन सब ऐप्स में, आप एक बार देखेंगे तो बार बार आपके सामने आता रहेगा। तो मेरे ख्याल से यही वजह होगी कि सुकून मिलता होगा शायद कुछ लोगों को। मुझे सच में नहीं पता कि मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं। क्यों इतनी पॉपुलैरिटी मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। आई फील कि किसी भी अच्छे पब्लिक स्पीकर में बहुत एम्पैथी होती है। आप में भी बहुत ज़्यादा एम्पैथी है, इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाकर, उनके दिलों के बारे में सीख कर। पर मेरा दिल ये कहता है कि आपका दिल एट सम पॉइंट आपकी लाइफ में टूटा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, रोमांटिकली नहीं कह रहा हूँ। वैसे तो टूटते ही हैं, दिल सबके टूटते हैं। हाँ, मतलब लाइफ ने आपका दिल तोड़ा है, रोमांटिकली नहीं। हाँ, वैसे तो मतलब 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हैं ही, बड़े इंसिडेंट्स हैं। क्या था सबसे बड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट का इंसिडेंट? हाँ, ये अगर कहना हो तो जब मैं 17 साल का था, डीयू में आ गया था। मैं 16.5 की उम्र में डीयू में आ गया था। तो मैं 16.5 की उम्र में डीयू में आ गया था। 17 का हुआ जब बीए फर्स्ट ईयर में था। तो हमारे घर में एक ट्रेजेडी हुई बहुत बड़ी, नॉट समवंस डेथ, लेकिन वैसी ट्रेजेडी हुई। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो महल से सड़क पे आ जाने की स्थिति बन गई। सो इन द एज ऑफ 17 व्हेन आई वाज एंजॉयिंग माय लाइफ, सब कुछ था मेरे पास जो दिल्ली में एक बच्चे को चाहिए रहने के लिए। बस एक बाइक लेने वाला था मैं उस समय, ले नहीं पाया था, लेकिन दोस्तों के पास बाइक थी। उस समय अचानक ऐसा हुआ कि ये चीज़ें सब खत्म हो गई घर में, और फिर मुझे अपने पेरेंट्स और सबको सपोर्ट करने के लिए सेल्समैन की नौकरी करनी पड़ी। तो मैंने ग्रेजुएशन का अपना पूरा बाकी टाइम सेल्समैन की जॉब करते हुए निकाला। कैलकुलेटर्स बेचता था मैं, फिर प्रिंटिंग कार्ड्स बेचता था। मतलब प्रिंटिंग की एक सेटअप था, उसमें ऑर्डर्स लाना, प्रिंटिंग करवाना, सप्लाई करना, वो सब करता था। वो 2 साल बहुत टफ थे। ज़्यादा टफ ये नहीं था कि मैं काम कर रहा हूँ, वो तो ठीक है, बच्चे तो फ्लेक्सिबल होते ही हैं। अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी कंडीशन से अचानक बहुत खराब कंडीशन में आते हुए देखना, यहाँ सर्वाइवल भी एक क्राइसिस हो, रिस्क बहुत सारा, डेंजर बहुत सारा हो, वो बड़ा टफ था। लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा कहता रहा। अब तो मेरी माँ नहीं है, 4-5 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। उनको हमेशा गिल्ट रहा कि हम जब बच्चों का करियर बनने का टाइम था, हम 3 भाई हैं, मैं उस समय 17 का था, दूसरे भैया 18+ के थे, बड़े भैया 20 के थे। तो जिस स्टेज में करियर बनता है सब बच्चों का, ठीक उस समय क्राइसिस आया। तो मैंने अपने पेरेंट्स को कई बार ये बात समझाई बाद में कि सुविधाएं तो हर पेरेंट देता है, आप भी दे ही रहे थे, और उस क्राइसिस ने हमें जितना सिखाया उतना किताबें और स्कूल और कॉलेज के। Welcome to the Mischief. I'm Valen, and this is Extra Utilities 2. So you're just getting into 1.10.2, Minecraft 1.10.2 that is, and you're interested in extra utilities. Well, there is a new system called Grid Power that allows you to, kind of remotely use kind of like an energy system. So it's Extra Utilities 2 own setup. And in order to access it, there's a certain sequence of events that you'll need to do in order to obtain some more information about that. But it basically will allow you to power different machines, as well as enhance and give yourself some abilities when you're using some items. Now, in order to obtain it, you'll need to start off with making a glass cutter. Glass cutter is made simply with some iron ingots and a stick, and it is a very useful tool because you can use it to harvest glass. Now, you notice I'm in survival mode, and I can use it to harvest any glass, panes. It's not a problem. It's just like a silk touch. And then, of course, you've got your, like, some of the items that, it does not work with sandy glass because that's not really glass. It's just, sand with some glassy bits in it. And then, of course, any of the Extra Utilities 2 glasses, it will allow you to harvest as if you had a silk touch pick. Keep in mind that Extra Utilities 2 at the time of this video is currently in alpha and heavily experimental. But you can see that you can pick up all these different items just by using your glass cutter. It's no big deal, very simple, but there's another use for it, and that is in cutting up an ender pearl. If you put a glass cutter and an ender pearl in an inventory grid, you'll be able to cut up the ender pearl into ender shards, 8 specifically. So you can see how if I drag these around, I can, it actually changes the how many are in the stack. It's really cool how Tama did this, who's the the mod maker. But that is the beginning to first cut up your ender shards.
Now, of course, you could also do exactly the same thing with a like a silk touch pick, but why bother doing that when you can just spend a little bit of iron, get yourself a glass cutter, which you're going to need to get into grid power on extra utilities anyway. Now, some of the base items on here, let me get those things off there. It's going to be a resonating redstone crystal, a polished stone, and a redstone gear. Now, these three items are kind of like how you make up a lot more of the other machines, some of the things that you'll be needing. Plus, the polished stone is actually a rather aesthetic item. You can put it down and it gets connected textures, so it's just really nice. It's made very simply. But first, let's start off with the resonating redstone crystal. This is made with 4 redstone in any shape. It doesn't have to be this way. It can be like this. It can be a couple here, one there, one over here, plus an ender shard, all in a crafting grid. So it's a shapeless recipe. Now, polished stone, on the other hand, is going to be any combination of bricks or mossy bricks or cracked bricks or chiseled bricks. Together, like you see here. It doesn't have to be in this exact location, but it does have to be, for so that you are making it again, and it will make you polished stone, which you will need as well. The last is the redstone gear. This is 4 redstone torches plus oak wood planks, and these 3 items are key ingredients in making a whole bunch of the rest of the mod. So, what's next? The resonator. This here allows you to kind of smelt things or transform them. It's a very key item. I will demonstrate this in a moment, but first, how to make it. A couple redstone, a block of coal, and a resonating redstone crystal, plus 5 iron ingots. So yeah, there's that first item there, the resonating redstone crystal. You'll also need a manual mill. You don't have to make a manual mill. You could feasibly skip past this, but it'll probably save you a lot of effort early on. And the manual mill is made simply with 2 polished stone, redstone gear, and resonating redstone crystal. So it's not that bad. I mean, it's really just a bunch of stone and redstone, maybe a few sticks in there somewhere. And this will allow you to generate some grid power. If you notice, I'm actually holding on to it. I now have this little user interface at the bottom that says grid power 0 out of 1 when I look at stuff. It's probably because I'm holding on to the manual mill at this moment. Now, with that aside, we are moving on to the solar panel. Now, this looks as such in my inventory here. Now, in order to craft it, it's 3 lapis, 2 polished stone, and a resonating redstone crystal. Now, what is the use of these 3 items? Well, let me actually grab that here. Now, the manual mill and the solar panel will passively, this one here will passively create grid power for you. And the redstone, or the resonator, excuse me, will, it's kind of like a furnace. When I click on it, it actually has an input area here, the output area here, and a space for speed upgrades. If you notice here, it actually says speed upgrades. So you can increase that. But anytime you put in a speed upgrade, it will double the cost. So we're not going to do that. We're going to just start off with some really easy stuff. Now, there are ways of keeping track of your grid system, and we'll get into that in just a moment. But first and foremost, you should know that a solar panel, it says it gives power during daylight hours. Must have a clear line of sight to the sky. So if I put one on top of itself, it's not going to allow you to do that. And it also is a bad idea. But it also will give you one base power or grid power GP per one of these you put down. So if I put down 4 of these, you'll see that I now have a total of 5. Now, let's say I go really far away. I'm flying around, and I hover over this. Look, I still have 5 in my grid system, and it's generating 5. I am using 0. So that's why it says 0 of 5. And you're probably wondering, why do I even want to bother with this stuff? Well, there's a ton of things you can use this power on, specifically things like angel rings that can allow you flight or other creations, as well as machines. But we'll get into those in another video. For now, we're just trying to get you started on the basics of extra utilities too. Now, that is one way of generating it, but that is a little bit intense because you're going to need a lot of lapis to make these, if you're making them in a large quantity. And everybody knows that if you have Tinker's Construct 2 installed, you're going to want your lapis to make luck on your weapons. But that aside, lapis has been getting more and more use. So there is an alternate method that can help give you a temporary boost, and that is this, the manual mill. Now, this is a manual mill that actually can run automatically. For instance, I will right-click on this. And you can see now the power generating says 15. My grid power says 16. I'm currently obtaining 1 grid power from my solar panel and 15 from this manual mill. Now you'll notice that you don't hear rapid clicking in the background from my mouse. That's because I only had to click once. It's a really nice item. Once I look away from it, it stops automatically. So you only ever have to click it once, and then you are currently generating that. Now, how and why would I want to do this? Allow me to demonstrate with this here. With this, the resonator, you're going to want to put ingredients in here, but they will require specific costs in order to do so. I've lined these up top to bottom in a way that demonstrates it. For instance, thickened glass, which the recipe is sandy glass being cooked in a furnace, but sandy glass is regular glass and sand of some sort. And with that, if you put thickened glass in here, at the cost of 1 GP, I'm just using these as a cost for GP. These are not actually grid power items or pellets or something. But at the cost of 1 to 1, you will get a redstone glass. So let's grab one of these here. And I'm going to put it in here, and you can see it actually do its work. Boom. That was really cool. And I now have redstone glass. Now, if I were to take something that costs 8, as you see here, I have it saying 8, to make a stone burnt item, then allow me to take a polished stone, put it in, and you'll see it powers up to 1.04. You always have about 0.04 in the system. That's to mean that you have to have the minimum of at least the cost here, 8. Now, in this case, it's a little weird. You're like, all right, well, how do I get this over? That's where you start generating this. And you'll notice my grid power says 1.04 being used out of 1. Once I click this, the grid power goes up, and it slowly will be used by that resonator, making you the item that you're looking to do. So you can see how this can temporarily give you a boost. There we go. 1 stone burnt, now done. Now moving on with that, if you take some gold-weighted pressure plates, you can make upgrade bases, which are used to make yourself different upgrades, which can be useful in other crafting recipes later. Lapis can be upgraded at the cost of 16, so that's right, you have to have a solar panel and one of these, and you can make yourself one of those really simply. So let's actually grab one here. And yes, this does accept things from an item hopper as well, so you could pipe things in there, and then therefore you could power this up as much as you want. Now if I stop, you look in here, it actually will stop.
there, and you can continue where you left off. So if you get interrupted, it's no big deal. It's not going to forget where it is. And it doesn't work that way. It remembers the solar panels. It remembers the manual mill. So when you're done with this, then you should be good to go, and it will make you the new item, lunar reactive dust, which we're actually going to use next. But you can also
to make red coal, which will be used in other recipes as well. But these all require 16. These recipes require 8. This recipe requires 1. So you can use this in order to make yourself a grid in order to power things. Of course, everything in here that is generating power is going to be passive. So this is going to be very easy to expand on. You just add some, put it down. You don't have to worry about powering it or feeding it items. It's just a matter of you put it down next to something, or it is activated or generates power from something existing already, and you should be good to go. So with that, you're probably wondering, how do I keep track of this? That's where the power manager comes into play. This is a fantastic little device. A very simple recipe that I did not put in that chest, but I do have it in my inventory. So a resonating redstone crystal plus 4 smoothed stone, and that gets you your power manager. Now, you look on here, you right click, and it actually tells you power generators, solar panel. I have 10 of them generating 10 GP. I have a bunch of inactive stuff, a lunar panel, a water mill, resonator, manual mill, lava generator, fire mill. You see all these numbers and stuff. They're all passive, not generating GP. I have a bunch of inactive stuff, so that I would have a water mill, resonator, manual mill. Now, grid power coming in. So you now have solar panel, but what happens if it's nighttime? You know, you want to switch it up. Well, you already know how to make lunar reactor. Dust. So that's where these come in, the lunar panels, and that is a lunar reactor. So with that, you're probably wondering, how do I keep track of this? That's where the power manager 16. These recipes require 8. Yeah, it doesn't work that way. Then therefore you could power this up as much as you want. Now if I stop, you look in here, it actually will stop there, and you can continue where you left off. So if you get interrupted, it's no big deal. It's not going to forget where it is. And if you think, oh well, I know what I can do, I could just take the solar panel and I'm going to place down another one. The cost of 6. Now done. Now moving on with that. It's a little weird. You're like, all right, well, how do I get this over? That's where you start generating this. And you'll notice my grid power system is 1 point. You always have about 0. So. Zack. Und diese Stone Bricks. Die legen wir wieder in einen Viererblock. Dann bekommen wir Polished Stone. Da, Mann. Um unser Menü erzeugen Strom, wir erzeugen Grid Power mit Hilfe des Redstones, der da drauf ist. Und das heißt, in der Zwischenzeit werden dann die Sachen, die ich hier reingepackt habe, bearbeitet. Und zwar
16 GP brauchen wir. Das heißt, wir müssen noch eine zweite vermutlich machen. Etwas Ruhe an Watermill. Stone machen wir. Das Polished Stone. Da sind wir wieder dabei. Also weiter mit unserem. Und wir nehmen, mal gucken, wie wir. 8 GPs nur. Und das klappt mit unserer Handmühle. So, gucken wir mal rein. So, vielleicht sollen wir noch mal ins Rezept gucken. Einfach die drehen. Können wir Steine aus. Okay, jetzt wird. Und immer schön drehen. Man sieht, die Grid Power geht jetzt nicht mehr hoch bis zu 15. Weil der Strom jetzt dafür verwendet wird. Haben wir schon 3 Stone. भी सिखा नहीं सकते थे. So that was the turning point, first turning point in my life, big turning point, जिसमें मुझे फिर मुझे ये समझ में आ गया कि कुछ भी हाथ से निकल जाए डरने की is Hector. Welcome back to How to Play FTB Farm. We went over some options for mob farms, and today we're going to do the biggest thing you can do these things as well. There's of power that only packs available to you, which will have able to do this. So if we look at the chicken wing system iron, might get and I'm thinking let's actually ring left, which is a very nice little thing. Like I say, you can also get those from breaking a redstone ore. So all we have to do, like this, to make 3, and then we need this polished stone, a little bit of lapis. Can I? Yeah, there we go. Let's get some more of that. Did I? Yes, I did. I totally got one of those as well. Let's make some more of these bad boys. There we go. 3 of those. That'll do for us for now. And then let's make some bricks. So that, there we go. And polished stone. How lovely. Let's make some of these.
We get 9 of those. That is excellent. Excellent, 9. So all we have to do, like it said, is you just put them out. You put them out anywhere. It's up to you. But they need clear line of sight to the sky. And each of these produces 1 grid power. Now you can see that if I look on it. There you go. It says grid power 0 out of 9. So the 9 is how much we have. We are currently generating in total. 0 is how much we're actually using. So we're not using any. And then there you can see power generating 1. That is how much out of 9. And if you look here, it will say the same. So let's get our chicken wing ring out, or whatever it's called. Where are you? There you go. Now you can see grid power 1 out of 9 because that chicken ring uses 1 GP. There you go. And what this does, you can see it basically allows us to float down. So if we double space, like double jump, basically, you can see it uses. There's a little timer. Now this isn't really used much. Let's try doing it.
ज़रूरत नहीं है। अब मुझे डर नहीं लगता है। हम लोग 1500 लोगों की टीम है एंड वी आर डूइंग गुड, पर अब डर नहीं लगता है मुझे उन सब बातों से। सेकंड टर्निंग पॉइंट मैं कह सकता हूँ जिंदगी में तब आया जब मेरी माँ की मृत्यु 5 साल पहले हुई। वो इमोशनल सेटबैक बहुत बड़ा था मेरे लिए, जो मेरी सेल्फ इवेल्युएशन को उसने ध्वस्त कर दिया। मतलब मैं फील करता था कि मैं बहुत मजबूत इंसान हूँ और मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, लेकिन मुझे फर्क पड़ा, बहुत ज़्यादा पड़ा। मुझे कंफर्टेबल होने में 6 महीने से 12 महीने का समय लगा। एक आध महीना तो ये था कि मैं उस मुद्दे पर बात ही नहीं कर पा रहा था, बोल ही नहीं पा रहा था एक सेंटेंस भी, जबकि मैं ऐसा खुद को नहीं मानता था। बाकी काम की दुनिया में छोटे मोटे सेटबैक होते हैं। 3-4 साल पहले ऐसा हुआ कि हमारे टीचर्स के एक ग्रुप ने मुझे छोड़ के सबने एक साथ छोड़ दिया अचानक, और ऐसा लगा कि बहुत बड़ा क्राइसिस है, लेकिन मैनेज हो गया आराम से। वी गॉट इवन बेटर टीचर्स एंड हमने ये भी समझा कि कोई सिस्टम का रन करना किसी इंडिविजुअल पे ना डिपेंडेंट होता है, ना होना चाहिए। सो वी स्टार्टेड डेवलपिंग सिस्टमिक अप्रोच rather than person oriented. यस। तो अब हम सिस्टमिक अप्रोच पे काम करते हैं। 1500 लोग हैं, आई एम वन ऑफ देम, एंड वी बिलीव इन मेकिंग द सिस्टम रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग। तो अब इंडिविजुअल सेंट्रिक सिस्टम, जैसे ब्यूरोक्रेसी में होता है, इंडिविजुअल सेंट्रिक नहीं होता है, ठीक वैसे हमारे सिस्टम वैसा है। सो नाउ वी आर इवन स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। Okay. इस पॉडकास्ट में पहले प्यार की बातें करी हमने, फिर एक और इमोशनल सब्जेक्ट आ गया। आप बस्सी को जानते हो, एक स्टैंड अप कॉमिक? अनुभव सिंह बस्सी, जी, मैंने जी, देखा एक दो बार। Okay. उसका एक मैंने देखा था एपिसोड था, वो कॉलेज हॉस्टल में शायद कूलर बच्चों ने गिरा दिया, ऐसा कुछ था। बड़ा इंटरेस्टिंग था। बस्सी भाई आए थे पॉडकास्ट पर। अच्छा, मैंने सोचा कि मजाक करेंगे उनके साथ, जोक्स रैक करेंगे। वो पूरा पॉडकास्ट सीरियस हो गया मेंस इमोशनल हेल्थ के बारे में। इतना दर्द निकला है उस पॉडकास्ट में दोनों तरफ से। आई फील कि अक्सर लड़के एक दूसरे से इमोशनल बातें नहीं करते, हाँ, और ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। इस पर अगर आपको इंटरेस्ट हो तो एक सिगमंड फ्रॉइड के स्टूडेंट थी नैन्सी कोडोरो, उनको पढ़िए। उनका थीसिस है, उसका नाम है द मेल इनएक्सप्रेसिवनेस। मेल्स डू नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस। वो छुपाते हैं ऐसा नहीं, उनकी वो कैपेसिटी बचपन में खत्म हो जाती है। और उसका पूरा उन्होंने कहानी बताई। कहानी ये बताई कि जब बच्चा 6-7 साल का होता है, आप देखेंगे जब बच्चा पैदा होता है, बेटा हो या बेटी हो, माँ के साथ चिपक के सोता है जी। तो उसको माँ के साथ बड़ा सुकून मिलता है। उसको लगता है कि यही मेरा संसार है, क्योंकि माँ उसकी सभी ज़रूरतें पूरी करती है, तो उसको कंफर्ट लगता है वहाँ। फादर के साथ अच्छा लगता है, पर फादर के साथ लंबे समय का कंफर्ट नहीं है, वो कुछ मिनट का है, कुछ समय मतलब एंजॉय करने का है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट में हमेशा माँ पसंद आती है। अब 6-7 साल या 8 की उम्र के बाद क्या होता है कि बेटे को हम माँ से अलग करने लगते हैं कि अलग कमरे में सो, दूर सो। और वो हर कल्चर की ज़रूरत है ताकि बेटे के मन में कुछ ऐसी फीलिंग्स ना आने लगें, क्योंकि वो बड़ा होने वाला है। बेटी को वो दिक्कत नहीं आती है। तो माँ और बेटी ज़िंदगी भर एक साथ सो भी सकती हैं, हर तरह की बात कर लेती है, क्योंकि माँ के जीवन के अनुभव और बेटी को जो अनुभव होंगे किशोरावस्था के बाद, वैसे ही सेम होने वाले हैं। तो बच्ची माँ से ही बात करेगी। बेटा भी किशोर होगा, पर बेटा माँ से बात नहीं कर पाएगा। और बेटे और बाप में तो और कम बात होती है। तो जो बेटा नाम का जो प्राणी है ना घर के अंदर, वो इमोशनली बहुत अकेला है। वो जब बड़ा होता है तो वो अपनी बातें, स्पेशली द चेंजेस इन बॉडी जो उसको फील होते हैं, बाप से तो वो कोई बात नहीं कर पाता, तो ये तो क्या ही करेगा। माँ भी इन मामलों में थोड़ा सा पर्दा रखती है बेटे के साथ, बेटी के साथ नहीं रखती है। बहन से कैसे बात करे इस तरह की। भाई अगर है बराबर उम्र का तो शायद कर ले, पर बहुत कम घरों में भाइयों में दोस्ती वाला संबंध होता है। आमतौर पे वहाँ वो सम्मान और रिस्पेक्ट वो हावी हो जाता है। इसलिए 13-14 साल के लड़के के पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो अपने दोस्तों से बात करे। दोस्त भी उतने ही अकेले हैं अपने अपने घर में, सही किसी को नहीं पता है।
तो कहीं कहीं से वो ज्ञान चुराते हैं, आपस में शेयर करते हैं, गैंग बनाते हैं अपना। और क्योंकि घर के अंदर से वो इमोशनल स्टेबिलिटी उनको नहीं मिलती है, सपोर्ट नहीं मिलती इन मामलों में, तो लड़के, मतलब नैन्सी कोडोरो जो बता रही है, मैं उनकी बात बता रहा हूँ जी। तो लड़का एक विद्रोह के भाव में रहता है कि मुझे मेरी माँ ने मुझसे अलग कर दिया और मैं अपनी बहन की तरह माँ के साथ नहीं रह पाता हूँ। तो घर की दुनिया से डिटैच होके बाहर की दुनिया में सुकून ढूंढता है। इसलिए आप देखेंगे जनरली लड़कों के लिए पैसा, रुतबा, पावर, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इसकी जितनी वैल्यू है जनरली लड़कियों के लिए नहीं होती है, क्योंकि वो घर के माहौल में अपनी माँ के साथ, पापा के साथ जितना सुकून उनको मिलता है, तो इनके लिए सफलता के मायने जनरली अलग रहते हैं। वो सफलता प्यार मोहब्बत में ज़्यादा देख पाती हैं। इसलिए आप फिल्मों में देखेंगे जब लड़के लड़की मिलते हैं तो लड़की क्या बोलती है, एक छोटा सा घर हो, तुम रहो, मैं रहूं। लड़का ऐसी बात आमतौर पर नहीं बोलता है। उसका सपना छोटा घर नहीं है, उसका सपना केवल तुम रहो मैं रहो नहीं, उसका सपना है कि एक महल हो, 50 नौकर चाकर हो, 20 गाड़ियां हो, क्योंकि वो खुद को साबित करना चाह रहा है बाहर की दुनिया में। और लड़की, सभी नहीं, जनरली लड़कियों के लिए सुकून का बिंदु है घर, परिवार, दोस्तों का समूह, एक छोटा समूह जहां इमोशंस आपस में शेयर हो जाएं, न कि ऑब्जेक्ट से वो अपने आप को डिफाइन करें। और ये इसकी जड़ है बचपन का वो अनुभव जब बेटे को माँ से अलग किया जाता है। सो नैन्सी कोडोरो हैज ब्यूटिफुली रिटन द बुक टाइटल्ड द मेल इनएक्सप्रेसिवनेस। मैं खुद एज अ कंटेंट क्रिएटर इसका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ इन पॉडकास्ट के थ्रू, कि अगर दो मर्द आपस में इमोशनल बातें करें शायद कुछ इम्पैक्ट हो जाएगा सोसाइटी में। तो करनी चाहिए। आई फेल्ट कि बसी भाई के साथ वो हुआ। पर 2-3 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड है जो अपने, उनका शायद डिवोर्स होने वाला है, तो वो मेरे से बात कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए और मैं उनके लिए वहाँ रहने की कोशिश कर रहा था और जो मेरे दिमाग में जोक्स आ रहे थे उन्हें भी ब्लॉक कर रहा था क्योंकि अक्सर आपको जोक्स क्रैक करने होते हैं अपने भाइयों के साथ, पर मैं शांति से उसकी बातें सुन रहा था। ये इतना मुश्किल होता है सर। आदमियों के लिए बहुत मुश्किल तो ये है कि किसी के दुख में हंसे बिना कैसे रहें। इसलिए कहीं किसी की डेथ हो जाए, आप बिहेवियर देखिए आदमी और औरत का वहाँ पर क्या है। महिलाएं जब जाती हैं जी, वहाँ कई महिलाएं बैठी हैं आराम से बात कर रही हैं, एक और महिला आई, सब मिलकर रोती हैं जी, एकदम ऑर्केस्ट्रा की तरह से चलता है। तो वो जो महिलाएं शांति से बैठ के बात कर रही हैं, एक की और आती सब कैसे रोने लगती है मैं नहीं समझ पाता, क्योंकि उनका अपने इमोशंस पे ऐसा कैसे कंट्रोल है। सब रोई 5-7 मिनट, फिर वो 7वीं महिला भी चुप हो गई, फिर बातें होने लगी, फिर 8वीं जब भी आएगी फिर 8 रोएंगी उसके बाद। तो बहुत पता नहीं कैसे मैनेज होता है। अच्छा, आदमी लोगों को आप वहाँ देखेंगे जी, किसी के दुख में जब जाते हैं, 1-8 मिनट हाथ रख के बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा लग रहा है। जिसको बुरा लग रहा है, जिसको दुख हुआ, बोलेगा हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है, फिर वो जाके बैठ जाएंगे। आंसू तो भूल ही जाइए आप। फिर 6-7 आदमी जहाँ बैठेंगे 2-4 मिनट चेहरा नीचे करके सीरियस होंगे, फिर खुसर खुसर शुरू कर देंगे कि भाई सेंसेक्स उठा के नहीं उठा, तुम्हारा काम ठीक चल रहा है। या फिर वो व्यवस्थाओं में लग जाते हैं, पानी पिलाना सबको, जूते सबके लाइन ठीक कर देना, क्योंकि वो दुख व्यक्त करने के माहौल में रह ही नहीं सकते। जी, जी। और आदमियों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि उनके परवरिश में उनको सिखा देते हैं कि रोना कमजोरी का लक्षण है। अगर तुम्हारी आंख से आंसू निकलता है तुम लड़की हो, लड़का नहीं हो। तो लड़की होना लड़कों के लिए बहुत ही डिमीनिंग सी बात मान ली गई है, जबकि ये महिलाओं की ताकत है कि वो रो सकती हैं। उनकी दवाई भी है, दवाई है जो हमारे पास स्ट्रेस नहीं है। हुआ, रो लिए, बात खत्म हो गई। जी, एक तो हमारा वैसे ही परवरिश का जो स्ट्रक्चर है गलत है, ऊपर से ये जो वैल्यू सिस्टम है कि रोए तो लड़की हो। अब लड़कों की दुनिया में कोई दुखी है, रोना चाहे, सब मजाक बना देते हैं उसका, जबकि सबको साथ देना चाहिए। मिलके ना भी रोएं, कम से कम साथ तो दें, गले तो लगा लें। पर रोना एक ऐसी बेहूदी बन गई है लड़कों की दुनिया में, तो फिर इलाज कहाँ से होगा? स्ट्रेस इकट्ठा होता जा रहा है, रो आप पा नहीं रहे, तो बहुत क्राइसिस है। लड़कों की दुनिया में क्राइसिस कम नहीं है, बहुत क्राइसिस है। सोल्यूशन है इसका?
सॉल्यूशन ये कि एक ऐसी कल्चर जिसमें रोना अच्छी बात मानी जाए। सप्ताह में एक बार रोने का दिन बना लेना चाहिए। जैसे होता है ना, मंगलवार को फास्ट रखना है या फ्राइडे को फास्ट रखना है, ऐसे एक दिन रोने का फिक्स कर दे कि आज रोना ही रोना है, अभी आधा घंटा कम से कम रो लो। वो मेरे साथ ध्यान में होता है। हाँ, तो ध्यान में मैंने सुना है कई लोगों को आंसू निकलते हैं। हाँ, क्योंकि आपको खुद का सामना करना पड़ता है ध्यान में, खुद के जज्बातों का सामना करना पड़ता है। मैं एक बार किसी के फ्यूनरल में गया था, किसी के फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी, और मेरा दोस्त था वो। तो जब आप मिलते हो फैमिली मेम्बर से फ्यूनरल में, मैंने बस उससे कहा कि यार मैं हूँ तेरे लिए, इशारों से, और वो हंसने लगा अपनी फैमिली के सामने। उस दिन मुझे मर्द होने की असलियत के बारे में पता चला कि हर जगह जोक्स होते हैं यार। नहीं, मुझे लगता था जब मेरी माँ की मृत्यु हुई, मुझे लगता था कि मुझे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं वैसा ही हूँ जैसे मर्द होते हैं हमारे देश में। वो इमोशनल एक्सप्रेशन कम करते करते इमोशनल ही नहीं रह पाते एक समय के बाद। मैं सरप्राइज था कि इतना कैसे मेरी नेचर चेंज हुई। मैं 1 महीने बोल नहीं पाया, 6 महीने फ्री नहीं हो पाया उस चीज़ से। 1 साल लग गया मुझे उस माइंडसेट से बाहर निकलने में। इसका मतलब, और मुझे खुशी है कि मैं कम से कम अपनी माँ की मृत्यु पर इतना दुखी हो पाया कि मतलब इमोशंस बचे हुए हैं, ये खुशी की बात है। हर बेटे को इस दौर से गुजरना पड़ता है एट सम स्टेज। गुजरना ही पड़ता है, और बेटा ही गुजरे अच्छा है, माँ ना गुजरे तो ही अच्छा है। मतलब माँ के लिए इस चीज़ से गुजरना कि बेटा नहीं रहा या बेटी नहीं रही, वो ज़्यादा दुख की बात है। तो ज़्यादा अच्छा है कि बेटे और बेटी ही इस दर्द को झेलें कि उनकी माँ नहीं रही, पिता नहीं रहे। इफ़ यू डोंट माइंड, एज अ मैन, मैं क्या सीखा उस फेज से? मैंने सीखा कि जीवन में जब तक कोई व्यक्ति है उसकी कद्र ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि जाने के बाद अब कद्र कितनी भी करेंगे तो वो फ़ायदा नहीं है ना। तो मतलब मैं अपनी माँ का बड़ा सम्मान भी करता था और हमारे बीच में बड़ा प्रेम भी था, पर फिर लगता है कि थोड़ा और समय दे पाता, रोज़ 1 घंटा और बैठ पाता। ये सब दुख तो होता ही है, और ये दुख सबको होना है। जब तक पेरेंट्स हैं आप टाइम बहुत दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आप खुद व्यस्त हैं अपनी ज़िंदगी में। आप सुविधाएं दे देंगे, समय नहीं दे पाएंगे। और समय में दिक्कत ये भी है कि उनकी जनरेशन का थॉट प्रोसेस, रुचियाँ इतनी अलग हैं कि हम 2 4 5 मिनट के बाद कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं बचता, क्या बात करें। जब केयर हम कर रहे हैं, वो भी हमारी केयर कर रहे हैं, लेकिन अब विचार और अनुभव और दुनिया, ज़रूरतें इतनी अलग अलग हैं, ज़्यादा बात हो नहीं पाती है। लेकिन फिर ये कि जब वो नहीं रहते हैं तो लगता है कि काश और समय दिया होता। ये तो है ही। तो मैं अब सबको इतना ही बोलता हूँ जिनके पेरेंट्स ऐसी किसी अवस्था में है कि भाई जितना हो सके करो, और समय भी दो, बाद में मलाल ना रहे कि कुछ कमी रह गई। ये गिल्ट बड़ा गहरा गिल्ट होता है। मैं लाइफ के उस फेज तक पहुंच गया हूँ जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स, मेरे माता पिता, चाचा, मामा, मामी, सब लोग अभी थोड़े थोड़े बच्चे की तरह बन रहे हैं। हाँ, और मुझे अल्फा बनने की ज़रूरत ज़्यादा फील हो रही है। ये भी अजीब फेज़ है। 30 से 40 की उम्र जिसमें अब आप आने वाले हैं ना, इस उम्र में पेरेंट्स की केयर ज़्यादा करने का मामला बनता है। और 40 से 50 के बीच में जनरली उनकी जुदाई झेलने का समय आता है। जनरली हमारे देश में जो एवरेज एज है उसके हिसाब से, किसी किसी केस में थोड़ा जल्दी होता है, किसी में बहुत बाद में होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 40 से 50 के बीच में ऐसा झटका लगता है। सो यस, यू हैव टू बी मोर अटेंटिव टुवर्ड्स देम। और क्या होता है इस उम्र में आके, What's your message to all the young Virat Kohlis watching this and young
this, and young Jemima Rodriguez is watching this. इस उम्र में आके ना उन्होंने जो अचीव करना था मोरलेस कर लिया होता है, वो रिटायर्ड लाइफ के आसपास पहुंच चुके होते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट ये बहुत ज़्यादा नहीं है कि फिनेंशियली कोई सपोर्ट करे, मतलब मिडिल क्लास में, क्योंकि वो जनरली इतना उनके पास होता है कि वो अपना काम चला लेते हैं, वो बहुत बड़ा इशू नहीं होता कई घरों में। उन्हें उनकी उम्र के कुछ दोस्त मिल सकें, ऐसा माहौल आप बना सकें, और उनके साथ दिन में 10 मिनट आधा घंटा कम से कम बैठ के बात कर लें, हो सके तो इमोशनल बातचीत, जो पहले की जनरेशन्स में आसान नहीं होता था। अब जो नई जनरेशन्स हैं, पेरेंट्स के साथ इमोशनल बातचीत ज़्यादा कर पा रहे हैं। तो अब नई जनरेशन्स में इमोशन का गैप कम हुआ है, एक्सप्रेसिव ज़्यादा हैं बच्चे, और मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स आजकल बच्चों के दोस्त पहले की तुलना में ज़्यादा बन पा रहे हैं, विच इज़ गुड। लेकिन फ्रेंडली कितना ही बन लें, फ्रेंड तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो बच्चे नहीं बनाना चाहेंगे ना, फ्रेंड तो क्यों बनाएंगे। और फ्रेंडली भी अगर हो पा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। कि मुझे लगता है आज से 30 साल बाद, जब मैं 30 तो शायद बच्चे भी नहीं, मेरे 20-25 ही बच्चे होंगे। आप ये सच में मानते हो? मुझे बचपन में किसी ने कहा कि तुम्हारी उम्र 77 ईयर्स की है। अब मुझे नहीं पता उस बात में कितना वजन है, पर मैं 50 का होने वाला हूँ। तो मेरे मन में बैठ गया है कि मैं 77 की एज में मरूंगा। बैठ गया है, हो सकता है एकदम गलत हो, कल का भी क्या भरोसा है। इसको ब्लिक कहते हैं फिलोसफी में। क्या? ब्लिक। ब्लिक का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसका कोई कॉग्निटिव एविडेंशियल बेस नहीं है, पर एक बात बैठ गई है मन में, एंड विच यू ट्रीट एज ए फैक्ट एंड यू डिसाइड अबाउट समथिंग ऑन दैट बेसिस। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी एज 77 तक रहने वाली है, तो मैं प्लानिंग उसी हिसाब से करता हूँ कितने साल बचे हुए हैं। हो सकता है मैं कल ही मर जाऊँ, क्या भरोसा हो, तो